Good day everyone, my name is Navneet Anand from AajKal, local and global. आज सिडनी में मेरे साथ बैठी है वो शख्सियत, सुर, ताल और साज सब पे है उनकी पकड़. जी हाँ, मेरी मुराद है मिस्टर अभिजीत सरकार. अभिजीत भाई, वेलकम टू द शो. Thanks for having me, Navneet. Thank you. बिफोर आई स्टार्ट, आप ऑस्ट्रेलिया कब आए? हम आए जो 1990 में. 1990 में. 90 में. About 30, more than 30 years ago. More than 30 years. So taking you back to India. Start from your childhood. वो गलियों की कोई प्यारी मीठी सी याद जो लगता है यार भी मैं एक बार फिर से ये इसको जी लूं. See, I grew up in a family of musicians and actors. My grandfather was a film actor. उसके बाद मेरे parents musicians थे. So I grew up in an environment. मैं पैदा ही हुआ वो सुर और ताल सुन के. Which was interesting, and those are good days. But my parents remember my parents used to be on stage all the time, and I used to sleep in the green room पीछे. वहीं पे सोता था मैं जब छोटा था मैं when I was little. Back in Calcutta, this was back in Calcutta. And financially we are not well off at all. We are quite poor actually. And although there were hardships थी वो, लेकिन फिर भी there are some lovely memories of my parents. Teaching me music and going up on stage. तो बड़े अच्छे दिन थे वो. अच्छा, अब तो सबने सिडनी में, रादर पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबने अभिजीत सरकार को मेलोडियस, मीठा, सुर ताल की पकड़ लिए हुए स्टेज पे देखा है. How was अभिजीत when he was a child? शरारती था, गुड बॉय था, क्वाइट था, शाय था? I was very quiet, very shy. I'm still an introvert, really. I'm not. But as a child, I was very shy, very quiet, keeping to myself. That's it. Hardly any playing around, nothing much. तो कभी वो कान पकड़ के टीचर ने बाहर नहीं निकाला? नहीं कभी नहीं. That came later on. अच्छा, चलो उसकी कोई याद सुनाइए. So in high school, it also happens in the company you keep. If you're naughty friends, you go a bit naughty. The school में I became quite naughty, but initially I was very very quiet. अच्छा, जब आपने बोला भी because of naughty friends around, आप थोड़े से शरारती हो गए. तो कभी ऐसा भी हुआ भी शरारत किसी और ने की हो और पकड़ा अभिजीत? हाँ जी, ऐसा भी हुआ है. And the other way around. And the other way around. Other way around also, yes. No, they were good days. आपके जो बचपन के दोस्त अभी देख रहे होंगे, तो they would be going back to the same memories. I'm sure they will. Yeah, few of them, yes. As you said, you have grown up in an environment where parents स्टेज पे होते थे, तो एक तो जीन्स में म्यूजिक था, तो उसकी वजह से पैशन एक तरह से ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गया. सो डू यू रिमेम्बर आपकी जो सबसे पहली परफॉर्मेंस? पहली परफॉर्मेंस तो कॉलेज में थी मेरी. अच्छा जी. हाँ, एज अ म्यूजिशियन कॉलेज में था. वो टैलेंट इवनिंग होती है कॉलेज में. तो दोस्तों ने कहा, आई वाज स्टिल वेरी शाय कॉलेज से. दोस्तों ने कहा यार गा लो एक गाना. मैंने कहा नहीं यार छोड़ो. एनीवे दे convinced me कि मैं जाके ऑडिशन दे दो, तो सिलेक्ट हो गया. And that was the first time that I went on stage. Back in '76. This is in Calcutta. This is in Ahmedabad. I grew up in Ahmedabad. So Calcutta, I was born in Calcutta, but by the time I was 2.5, 3 years old, my parents moved to Ahmedabad. तो वहीं पे my education, all my training, everything is in Ahmedabad. पहली performance in 1976. Do you still remember कौन सा गाना था वो? हाँ जी बिल्कुल. देवानंद की फिल्म बनी थी जी उन दिनों. तो मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम. पहला गाना था 76. स्टैंडिंग ओवेशन रही होगी. स्टैंडिंग ओवेशन रहेगी क्योंकि जिस हिसाब से द मोमेंट यू गो ऑन द कीबोर्ड ऑन हारमोनियम, जिस हिसाब से वो आंख बंद करके जब गाना शुरू करते हैं, वन कैन इजीली जज ये दिल के गहराइयों से निकल के आ रहा है. एनी फॉर्मल ट्रेनिंग इन म्यूजिक? हाँ जी. सो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग अंडर माय मदर. अच्छा जी. माय फादर वाज अ रिदमिस्ट. वो तबला वगैरह बजाते थे बहुत अच्छा. माय मदर वाज अ क्लासिकल वोकलिस्ट. तो मुझे ये आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग मुझे मिल गई, रिदम की और मेलोडी की. But later on, I learned from very good teachers
बड़े अच्छे फैमिलीज में आई लर्न क्लासिकल म्यूजिक In Ahmedabad? अहमदाबाद में, हाँ जी, हाँ जी। In Ahmedabad. हाँ जी। Right, right, right. उन टीचर्स की कोई पहली याद भी उन्होंने बोला भी हाँ आज तूने बहुत बढ़िया काम किया है। अब मुझे आज भी याद है वो 2 रुपए 5 रुपए देके एक इनाम देके एक हौसला अफजाई किया करते थे उन दिनों में। हमारे जो देखिए जो हमारे टीचर्स थे ना, दे वुड हार्डली प्रेज, अच्छा। हार्डली एवर। इनफैक्ट कभी गलत गा लिया या तो मूड नहीं आ तो निकाल देते थे रूम में से। You know, our teachers back in India, it's a different, they had a wealth of knowledge. लेकिन वो जो है वो अपने मूड में होते। कभी कभी हमें सुबह 5 बजे 5:30 6 बजे बुलाते थे गाना सीखना सुबह, कि सुबह का राग करना है तो सुबह आ जाओ। और वहाँ पहुँच गए तो देखे कि वो उनको गाने का मूड नहीं है, वो कुछ खा रहे हैं या तो समथिंग लाइक दैट, एंड यू कम बैक होम। So there was no word of praise, there was nothing. You just go there because you want to learn. मेरे ख्याल से ये एक तरह की एग्जाम भी रहता होगा आप लोगों के लिए, एवरी डे काइंड ऑफ थिंग, टू लुक एट हाउ डेडिकेटेड आर यू टुवर्ड्स द म्यूजिक। वो यही देखते थे कि कितना परसिवियरेंस है। अगर वो इफ दे सी समबडी गोइंग थ्रू दिस हार्ड टाइम्स और बोले कि नहीं मैं सीखूंगा ये जरूर, कुछ भी हो, गालियाँ सुननी पड़ती थी, लेकिन देन दे जज यू दैट ये सीखेगा, ये मेहनत करेगा जरूर। Who has been your inspiration? In music, you mean? I've been inspired by quite a lot of people. Mostly I've been inspired by a lot of music directors from the olden times, because of their technical perfection of composing music. तो मैं बड़ा impressed हूँ ऐसे म्यूजिक डायरेक्टरों से। क्योंकि जो आजकल म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा है, there are a lot of computerized notations are coming in, but पहले के वक्त में पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा बैठ के, हाँ जी, acoustic सारे बजाते थे। मैं उन दिनों जाता था बॉम्बे में रिकॉर्डिंग सुनने जी, और म्यूजिशियंस के साथ रहता था और सीखता था। आर.डी. बर्मन के स्टूडियो, लक्ष्मण प्यारेलाल के स्टूडियोज में जाता, जस्ट टू सी एंड लर्न। तो कुछ नहीं तो 60-70 म्यूजिशियंस पर सॉन्ग होते थे। 60 to 70 per song. हाँ जी। And look at the synchronizations of the music. वो ये होता था नवनीत कि वो सारे पढ़ते थे म्यूजिक। अच्छा जी। अगर both of us read from the same page, the same story, we are both going to read the same thing, isn't it? तो ये 70 म्यूजिशियन सारे पढ़ते थे म्यूजिक क्यों? That's why they're perfection. There were no mistakes, nothing, कुछ भी नहीं। Well, singing music, coming from an artistic background, मैंने आपके कार्टून, you know, I don't call it a satire, but yes, हर कार्टून में कुछ ना कुछ अर्थ जुड़ा रहता है। So when did you start doing sketching? My mother says that I started drawing before I could talk. Actually, तो मैं जब छोटा था, apparently I used to draw on the floor all the time. अच्छा। हाँ जी। So I think that was something that was inbuilt in me, drawing more than music actually. I think. Okay. हाँ जी। I think the level of things that I was born with, I think my painting, drawing, illustrating abilities were much more than music. And then later on I started sketching वगैरह में। तो 1984 में I was working with for Times of India. अच्छा। उनके IT डिपार्टमेंट, I was looking after their IT डिपार्टमेंट। अच्छा, कार्टूनिस्ट नहीं थे? नहीं बिल्कुल नहीं। And during the lunch तो बैठ के मैं I used to draw cartoons वगैरह। तो one of the editors saw it and बोले ये तो अच्छा तुम बनाते हो तो I'll publish it in Times of India। तो 84 में my first cartoon was published in the Times of India में, Ahmedabad में। And that's how I got spurred on. I thought I must do more of this. Well, here on record, on the camera, I invite you, please. I would be happy to share your cartoons in Fiji Times, India Times, Australia, print edition as well. My pleasure. It will be my pleasure, Navneet. Always, anytime. That would be lovely. It will be a treat for the readers to go through it. It will be the treat for readers to go I'll through definitely it. do. Coming from an artistic family, I think एक मिश्रण हो गया है पूरी सब कलाओं का। अगर मिश्रण करके बोले तो वो क्या निकलता है? वो अभिजीत सरकार निकलता है। म्यूजिक टीचर here in Sydney. How are you enjoying this journey at the moment? I love teaching. पहले I used to teach. My life, a lot of my years have gone in teaching. I started teaching mathematics, pure mathematics originally after my post-graduation. And then I used to teach computer science in the post-graduation. Teaching has been my passion for a long time. And out here, यहाँ पे आके, when I started Nataraj Academy, it's gone very well. And the whole thing is that I really enjoy teaching. I never consider myself to be a teacher. Never. I don't think I have the abilities. What I do is distribute whatever little I know to people. That's all I say. I just share
whatever knowledge I have. 45 years in music industry. मेरे ख्याल से बहुत लंबा वक्त होता है किसी भी शख्स के लिए एक फील्ड में रहना. Yes. And not only achieving the success, I think more harder part is sustaining it. Yes, very hard. What is the mantra behind it? The mantra is that you have to rediscover yourself every day. ऐसा नहीं कि मुझे इतना आता है या ये सिखाऊं मैं, तो उसी को पकड़ के बैठे रहें. So you have to move on with the times. You have to look at technology. You have to see new styles of music, new styles of creativity. You have to move with the times. You can't just hold on to that time and just sit there. तो आज जो स्टेज पर मेरे साथ हैं, they are so young, some of the musicians, but you have to keep up with them. So if you want to sustain yourself, you have to move on, discover yourself. This younger generation has lot to offer people of our generations as well. Yeah, it's fantastic stuff. Right. They're so skilled, some of them. If I have to request few of the lines जो आपके दिल के बड़ी करीब है, एक, दो, तीन, whatever number of songs you wish to, if we can do it for the audiences. मैं एक, मैं जो आपके दिल के सबसे करीब. चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों. चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों. इस तरह के गाने मुझे पसंद है जिसमें पोइट्री की अहमियत है. There is a lot of depth in साहिद लुधियानी की पोइट्री में. So most of my favorite songs are along these lines. तो ये तो बात हुई सिडनी में म्यूजिकल जर्नी की. If I say जिस तरह की आपने आवाज पाई है, जी. माता सरस्वती का आपके ऊपर वरदान रहा है, बॉलीवुड जाने का कभी मन नहीं हुआ? देखो ऐसा है कि मैं before I got into music, I got into acting actually. When I was much younger, I did a stage show at a theater. एक कहानी है. और किसी ने मुझे कोई प्रोड्यूसर ने मुझे ऑडियंस में देख लिया. I was little. I was in year 7 at that time. और वहाँ पे इंडिया में मल्लिका साराभाई और मृणालिनी साराभाई, उनकी एकेडमी है दर्पण. So they invited me to join them to be trained in acting. अच्छा. मैं छोटा था तो मैं एक्टिंग सीखने गया वहाँ पे. और जब मैं एक्टिंग सीख रहा था, बोर हो जाता है बच्चा जो होता है वो डायलॉग पढ़ के. और मैंने खिड़की से देखा तो बगल में देयर इज अ लेडी हु वाज मैनिपुलेटिंग पपेट्स. अच्छा. हाँ जी. तो मैंने बड़ा मन हो गया मुझे कि मैं ये घर जाके मैंने अपने डैडी मम्मी से कहा कि मुझे अब एक्टिंग नहीं सीखनी है, मुझे वो पपेट थिएटर सीखना है. तो उन्होंने कहा ठीक है. तो उस तरह से मैं आई मूव फ्रॉम एक्टिंग टू पपेट थिएटर. सो दैट इज वेयर माई जर्नी ऑन स्टेज स्टार्टेड एक्चुअली. एंड देन आई गॉट अंडर द ट्रेनिंग of a legendary puppeteer, the name of a Meher contractor who was internationally known. So she trained me in theatre and puppetry for many years. It's long before music came in. अच्छा, मेरे लिए ये बड़ा आश्चर्य है that I'm hearing it for the very first night. Yes. तो उनके साथ मैंने टूर भी किया. I went to Iran and to France for international performances of theatre and marionettes जिसको कहते हैं puppetry. तो काफी मैंने ट्रेनिंग ली इससे. So that is my starting point actually, much before music. अच्छा, मुझे नहीं मालूम सिडनी में और कितने लोगों को पता होगा. नहीं, ज्यादा लोगों को पता नहीं है. तो क्यों ना आने वाले दिनों में एक छोटा सा इवेंट एंड शो जो भी आपका हो रहा है उसमें ये पपेट वाली जो कला है ये भी आपकी दिखाई जाए. It's a rare form of art. बिल्कुल. एंड ये अभी खत्म होती चली जा रही है. It should have more exposure. I should do something. So instead of I can't because I have to create and build puppets. They say that's why I have started writing theatre now. So I'm writing plays. I'm hoping to produce it next year. What's on your wish list? Wish list में तो एक ये है कि one is to see people who are with me who learn music from me. I want to see them go forth and become and get into the professional stage, which is happening. Many of the concerts in Sydney में many students आज commercial stage पे हैं. This is really satisfying for me to see that. And I'm hoping to also start teaching languages. Achha. I want to teach. I want to get teachers to teach English and Hindi and whatever is possible, different languages. And the third is, as I said, I want to get into theatre
as a writer and produce my own plays. Music तो मैंने बहुत कर लिया है. You know, I've done more than 1800 concerts in my life, so I'm very satisfied, okay, whatever I have done. But now some new things, you know. Before I wrap up, what would be your message to the budding musicians, singers, or whoever want to come into this line of singing? Before I tell something to the upcoming musicians, one thing that I do through music is to give. 10 years ago, my wife was diagnosed with breast cancer, and from that day we decided, and she's okay. But that day we decided that, look, whatever proceeds we get from my creative pursuits should be given to breast cancer research. So that from the last 10 years, the two of us have been doing that. Through all my concerts over here, whatever I write, everything goes to breast cancer. So the first thing I would tell people, that if you're okay with it, if you're happy, then try and use your art, your music, whatever you have, to give back to society. It's a great way of giving back to society. Give them not only in terms of money, but in terms of joy and happiness. Art is a good way. It has no language, so you can give back to society as much as you want. The other thing for new musicians, artists, is that one thing that is, you must remember there will be a lot of hardships. If you're a musician or an artist or a dramatist or an actor, there will be a lot of hardships. So first thing you need to do is to persevere. Get your perseverance. कुछ भी हो, छोड़ो नहीं, लगे रहो उसमें. And the second thing is hard work. It needs a lot of hard work, a lot of sacrifices in life to become an artist. So I would advise them to get ready for hard work and perseverance, and not give up, because it's not an easy place to be financially too. But keep on going with hard work. Put your head down and keep on working away. I have done hundreds of interviews in my life with people from different segment, but Aaj Ki Baatcheet, the conversation of today, is very close to my heart. Abhijit bhai, thank you so much. Thank you. Thank you. Thanks a lot. आज हमने की अभिजीत सरकार से बातचीत, और मैं आपका नवनीत एक बार फिर से थैंक यू सो मच. Thanks a lot. Thank you. One-stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times.